Hello, my dear students and friends. So, welcome to our RSV Physics Class. So, this is lecture 2 on current electricity for your class 12 NEET and JEE. Okay. So, basically in this class I will be discussing on combination of resistance. So, different combination in series and parallel. है ना? Series and जो है parallel. So what is the equivalent resistance? So resistance in it is very much useful in different circuits. उसमें different types of you can you have to put this resistance in different combinations, है ना? Sometimes it may be series, sometimes it may be parallel. So equivalent resistance in series and parallel we have to calculate, है ना? So this is the basic things. So when resistance of one resistance R1 and another resistance R2, okay, so it is connected by one's end and another's beginning. So this types of connection, so it is, if it is connected in one's end and another beginning, so this is called series resistance. This is series combination. Okay, so series, if your current is passing through this, so somehow this is, it is EMF, this is voltage, current is flowing through this circuit. Okay, so here the current will be passing, so here current, so current will be same, here current, same charge will be passing this circuit, same charge will be, yeah. So now the total voltage, so why it is a voltage V1, it is voltage V2. So you can write total voltage V equal to V1 plus V2. Okay, so this one equal to I into R1 plus I into R2, and this voltage you can consider in the single resistance, just like a equivalent resistance. How? So this is a equivalent resistance, and this is the circuit, and this is R equivalent. So you can replace all resistance by one equivalent resistance. So this is R equivalent into I into R equivalent equal to I into R1 plus R2. So R equivalent equal to R1 plus R2. So this is the equivalent resistance in series. And if the series resistance in n number of series, so in that case you can write into Rn. Okay, so this is equal to summation of Ri, I tends to n. So this is the series equivalent resistance and series combination. Okay, now if resistance are put in parallel combination, so what is the parallel combination? You just you have to write. So parallel combination is just like this circuit. Here you have to, so this is the resistance and this is the resistance. Okay, and volt here, the battery is connected here, so current is flowing this direction. So now here current is divided into two portions. So if it is current I, then it is dividing, it is current is flowing to I1 and this is I2, but voltage between this is obviously V voltage, है ना? So how can you write this? So equivalently, so here current I equal to, you can write I1 plus I2, and equivalent resistance of the circuit, this is equivalent resistance and this is the voltage, this is R equivalent. Okay, so current I you can write as a, this is total voltage over R equivalent. So this is the current time, one resistance, this types you can write. And I1 is this is resistance of R1 and this is resistance of R2. Okay, so I1 is voltage V over R1 and I2 is voltage V over same voltage. This is the parallel ones, both resistance
resistance initial point and end points are connected in a joint. So you are just welding it. Yeah, it is, you are just tightly you are binding it. Okay, so this is R2. Okay, so 1 upon R equivalent equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. So this is the equivalent resistance of this. I mean, it is combination of different combinations. Okay, so a numbers of series, for you can write 1 upon R to the power n. So summation of 1 upon R to n. So 1 upon R equivalent equal to R is summation of this. So R equivalent is R equivalent 1 upon R equivalent equal to R1 plus R2 over R1 R2. So R equivalent equal to R1 R2 over R1 plus R2. So this is the equivalent resistance in parallel combination. Okay, so this is the series and parallel combination. Now I will be discussing on EMF, voltage and what is the EMF? Electromotive force. So this is not, so now cell here. So this is the circuit, this is the volt, this is the cell, it is a battery. Okay, so this is the cell and here resistance. So power will be coming here if your every device, electronic gadgets, जैसे आपका bulb, जैसे your fan is running, so it is taking energy. From energy, where it is coming? From cell or another power generator and everything. है ना? For small circuit, this is power is coming from cell. So cells जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट में है जो है केमिकल एनर्जी है ना. दिस केमिकल एनर्जी ट्रांसफर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना. ओके, नाउ हीट एनर्जी आपका जो पावर जनरेटर जहाँ पे है, जहाँ पे आपका पावर प्लांट है, सो देन इन दैट पोजीशन जो आपका जो है हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इस टाइप से है ना. सो सेल टोटल पावर इज P इक्वल टू I इंटू V एंड दिस इज V इक्वल टू जो है V इक्वल टू IR, दिस इज I स्क्वायर R है ना. दिस इज द पावर है ना. Now or in types of you can write जो है I is the V over R, और क्या लिख सकते हो, this is V square over R. Okay. And what is पर टाइम में होगा. ओके, सो इस तरीके से. सो नाउ सेल, so cells chemical energy is converting into जो है potential energy. So you know this is the electrochemical cell. आपने आपके कभी बैटरी देखे होंगे. So this is the cell. Okay, there is a different types of electrode and you are connecting it to resistance. Okay, this is the cell. So this is the resistance R है ना. आप बैटरी से डिफरेंट कनेक्शन करके अपने म्यूजिक बॉक्स ये सब बजाते हो ना, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी है. सो ये सेल जो है दिस लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इट इज देयर इज टू इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड. ओके, so this chemical energy converted into electrical energy. So in the cell, जो sometimes there is a total जो voltage. Now EMF. So EMF is the actual electromotive force. This is not actually force. This is actually voltage. When your circuit is just cross, this circuit is cross. So cell is not connected to any external load. This is called load or resistance, है ना. It is not connected to any external resistance. Then the voltage between this portion. If you put your voltmeter into this two port, this is positive and negative. This voltage is called EMF when no connection in circuit, है ना, no connection to external circuit.
is EMF. So EMF is basically electrochemical energy जो है आप this is so this is driving the driving force between behind the current generation current electricity. Okay, so now total EMF is volt is it is I if it is current is passing through this circuit, if now it is connected, if current is flowing through circuit. Okay, है ना. Now total voltage is V equal to IR. Okay, this is R, and there is a small internal resistance. This is R. Okay, V equal plus IR. Okay, this IR is actually voltage E. This is you can write total EMF voltage, है ना. EMF is, and this this is the actual voltage drop against the resistance. The actual voltage we are getting from the cell is V. So actual this is EMF equal to V plus जो है V plus IR. So actual voltage you are getting equal to E minus IR. This is due to this voltage you are not getting due to cell's internal resistance. That is the lost potential, lost potential or lost voltage. Okay, so लॉस्ट वोल्टेज से ये वोल्टेज आपको नहीं मिलता. सो ईएमएफ माइनस जो है लॉस्ट पोटेंशियल या लॉस्ट वोल्टेज इक्वल टू योर एक्चुअल वोल्टेज यू आर गेटिंग अक्रॉस है रेजिस्टेंस. ओके, सो दिस इज द ईएमएफ. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. ओके, सो इफ यू आर पुटिंग योर सेल, सो अगेन now you have a 12 volt cell. Okay, so you are putting a cell. This is your 12 volt cell. Okay, this is 12 volt, this is positive negative, है ना. So you want 36 volt. How can you combine this? So you have to connect it just जो है आपका total ये है ना, and this combination, so that current will flow in same direction, है ना. ये इसका करंट इधर, इसके लिए वजह से करंट इधर, इसका करंट इधर, है ना. In this combination, this is the voltage between this port is 36. This is 36 volt. This is the series combination. So if you want to increase the voltage, total voltage from battery, so in your cell sometimes जो है it is putting 100 ampere, 50 milliampere, 50 एम्पियर आवर, है ना. बैटरी के ऊपर ऐसा लिखा हुआ रहता है. सो 50 एम्पियर आवर, है ना. सो 50 एम्पियर आवर जो है आपका इट मीन्स इट कैन गिव 50 एम्पियर करंट कॉन्स्टेंटली एंड विद इन 1 आवर, मतलब जो है ऐसा, है ना. सो 1 आवर जो है आपका जो 1 आवर तक 50 एम्पियर करंट दे सकता है. सो आपका जो है अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है ना, एम्पियर टोटल अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है ना, 12 वोल्ट की बैटरी अगर है सर, टोटल कितना वाट होगा, 600 एम्पियर इंटू वोल्ट. एम्पियर इंटू वोल्ट इज वाट, है ना. सो ये जो है 600 वाट इसका टोटल, इसका 600 वाट 600 वाट इंटू ये जो आवर है ना. सो इतना पावर वो 1 घंटा तक दे सकता है ना. सो इफ यू पुट योर बैटरी इन डिफरेंट दिस कॉम्बिनेशन, दिस इज पैरेलल कनेक्शन. ओके, पैरेलल कनेक्शन में आपका इसका वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगा, बट इसका करंट इंक्रीज होगा, है ना. सो ये जो है आपका, सो करंट आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको यू हैव टू पुट से करंट विल इंक्रीज इन पैरेलल कनेक्शन, बट वोल्टेज विल इंक्रीज इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सो इसका जो करंट I current, so total 3I current you can take, but here current is only I current is flowing, only I current is flowing here. So current is not adding here.
So but yeah, current is adding, but voltage is not increasing. So voltage is 12 volt you are getting. Okay, so there are different types of cells. प्राय वो अपने बचपन में पढ़े हैं ना, प्राइमरी सेल एंड जो है सेकेंडरी सेल. So what is the primary cell? Basic standardization you want. So है ना, आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना है जिस सेल के रेस्पेक्ट में. सो प्राइमरी सेल जो है आपका डेनियल सेल, ये सब अपने बचपन में पढ़ा. डेनियल सेल. और जो बैटरी जो है नॉर्मल जो है ड्राई बैटरी, दिस इज नॉट रिचार्जेबल. सो ये बैटरी रिचार्ज नहीं कर सकते. वो वन इट इज यूज्ड, देन यू हैव टू थ्रो इट. But secondary cell it is calibrated with respect to primary cell, and secondary cell it is rechargeable, है ना. So this is useful for our daily life. So this is rechargeable lead acid battery. और जो रिचार्जेबल डिवाइस जो बैटरी लिथियम आयन बैटरीज ये जो है ना, सो लिथियम आयन में भी लिथियम आयन बैटरीज. So इसमें these batteries can be rechargeable. So this is called secondary cell. Okay, now हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एमीटर एंड वोल्टमीटर. सो बेसिकली फॉर मेजरिंग योर करंट इन सर्किट, है ना, दिस इज द करंट फ्लोइंग इन सर्किट. सो दिस साइन इज, सो दिस इज द वोल्टेज. ओके, सो दिस साइन इज एमीटर, है ना, दिस इज एमीटर. सो एक्चुअली एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस पाथ जो रहता है ना, वहां पे आपके गैल्वेनोमीटर रहता है. गैल्वेनोमीटर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, है ना. सो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जैसे गैल्वेनोमीटर जी और एक शांट रेजिस्टेंस रहता है यहाँ पे, है ना, जो है ये शांट रेजिस्टेंस जो है बहुत कम रेजिस्टेंस, सो दैट ये करंट जो है गैल्वेनोमीटर के थ्रू होके पास करे, है ना. और जो है इसके थ्रू, सो दैट ये इसका करंट का डिफ्लेक्शन ऑलरेडी कैलिब्रेटेड विद दिस. इस टाइप का पहले गैल्वेनोमीटर देखोगे तो इस टाइप के नीडल रहते हैं. तो कितना वोल्टेज जो है उससे पता चलेगा, कितना करंट जो है इससे पता चलेगा. सो दैट करंट विल पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर. सो है ना. आप जो है वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर इज बेसिकली हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, है ना. सो वोल्ट मीटर इसमें एक हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है. सो दिस अगेन इट इज गैल्वेनोमीटर बट विथ हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस. जो है यहाँ पे जो है एक हाई रेजिस्टेंस, फिर ये इसके साथ जो है थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ. सो आपका जो है इसमें देखिए, सो दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द वोल्टेज हियर, एंड इफ यू वांट टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन टू पोर्ट देन यू हैव टू पुट वोल्ट मीटर. सो वोल्ट मीटर अगेन इट इज ए गैल्वेनोमीटर, है ना, हाई रेजिस्टेंस के थ्रू दिस विल, सो दैट इसका जो है करंट जो है आपका, सो कार्सॉफ्स लॉ जो है दो, वन इज केसीएल कार्सॉफ्स करंट लॉ एंड अनदर इज कार्सॉफ्स वोल्टेज लॉ. ओके, ठीक है. आप जो है प्यार से कुछ भी बोलिए, है ना. नाउ व्हाट इज द करंट लॉ? At any junction, the current in circuit entering the junction equal to the sum of current leaving the junction. ये ऑलरेडी आपने किया है ना. ये आपका जंक्शन, दिस इज द टू रेजिस्टेंस, एंड हियर करंट आई इज फ्लोइंग टू दिस, हियर इट इज डिवाइडिंग करंट, है ना. करंट इज डिवाइडिंग टू सर्किट. if it is not connected, then current will go total I current इसमें इसके थ्रू पास कर जाएगा, है ना. But when it is just branching junction, then your I equal to I1 plus I2. So current entering junction, यहाँ पे करंट का accumulation है. So जितना करंट यहाँ पे एंटरिंग करेंगे उतना करंट it will leave the junction. So that यहाँ पे जो है आपका I minus I1 minus I2 equal to 0, and in that form you can write also I equal to summation of I जो है 0 and that junction. Okay. Now Kirchhoff's voltage law. What it is telling? The algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistance and cell is 0. Now ये आपका resistance, ये आपका सेल, है ना,
टू रेजिस्टेंस दे देते हैं, है ना, टू रेजिस्टेंस इज देयर, दिस इज द वोल्टेज, इट इज R1, इट इज R2, दिस इज करंट फ्लोइंग दिस I, है ना. सो V इक्वल टू हाउ मच, V इक्वल टू IR1 plus IR2, then V minus IR1 minus IR2 equal to 0. So आप इस तरीके से अगर देखेंगे this voltage, so this is अगर V1, this is V2, so this is sum of Vi equal to 0. ये क्लोज लूप में इस तरीके से आप अगर देखिए, whether it is clockwise, you may take also anti-clockwise, voltage minus this voltage and this voltage, so algebraic sum, this is algebraic sum, है ना. चेंजेस, ये जो वोल्टेज यहाँ पे जो जितना वोल्टेज है ना, चेंजेस इन पोटेंशियल इन एनी क्लोज लूप, सो ये वोल्टेज यहाँ पे जो वोल्टेज होगा माइनस दिस वन, एंड ये वोल्टेज है माइनस दिस वन, इन्वॉल्विंग रेजिस्टेंशियल इज 0. सो ये तो आपको पहले ही पता था, बट इस तरीके से लिखने का क्या जरूरत है, required, because in complicated circuit it is very much useful to calculate it in a particular circuit. particular circuit में आपको एक देता हूं, तो उस सर्किट में आपको किसी भी in any types of loop how much current is passing this loop you can calculate using KCL and KVL. okay, so now I am giving a small loop. कैसे कैसे दिखते हैं, सो पार्टिकुलर एक स्मॉल लूप देता हूं, सो उस लूप में आपको कितना कितना करंट चाह रहे हैं, so that तो जस्ट कैलकुलेट वन लूप. इसके लिए आपको जो है we have discussed Kirchhoff KCL and जो है this is KVL. So now using KCL and KVL I am giving a small problem. See, small but very bigger problem, है ना. So here this is connected to battery. This is voltage V, and every resistance consists of resistance R, है ना. This is resistance R, this is resistance R, this is resistance R, this is resistance R, resistance R, resistance R. So find out equivalent resistance between point A and B. So RAB equivalent resistance कितना है, KCL and KVL यूज करके आपको निकालना है how much resistance between this circuit. okay, so ये आपके लिए होम टैक्स है ना. so now I will be discussing Wheatstone bridge. Stone bridge. What is Wheatstone bridge? So basically this is the combination of different resistance so here voltage is connected and there is a galvanometer. okay, galvanometer between this. So resistance, this is P, this is Q, this is R, S, है ना. So one combination of P and Q just choose, then you know जो है आपका R is ये आपका है known resistance. By finding this combination you this is P by Q ratio, you know known resistance, and you R you also know. Then in certain condition you can find out the resistance. This is unknown, and this unknown resistance you can find out. And which condition P by Q equal to R by S? This is called balance condition. Balance condition means current will not pass through this, so current IG equal to 0. आपको इस तरीके से कॉम्बिनेशन चूज करना है P by Q and R by S जो है ना. सो करंट विल नॉट पास थ्रू दिस पॉइंट जो है ना A B C D. सो BD पास में कोई भी करंट पास नहीं करेगा. सो गैल्वानोमीटर या जो है ये यहाँ पे जो एमीटर जो लगा हुआ ना, सो आई डिफ्लेक्शन, इसका गैल्वानोमीटर में जो डिफ्लेक्शन दैट विल बी 0.
इन दैट कंडीशन व्हेन I इक्वल टू 0, सो इन बैलेंस कंडीशन दिस जो है करंट जो है आपके इसके थ्रू करंट नहीं पास करेंगे, तो उस कंडीशन में P बाई Q इक्वल टू R बाई एस। नाउ सी ये कंडीशन कहाँ से आ रहे, सो आप जस्ट कंसीडर टू लूप, लूप 1, लूप 2, लूप 1 इज A B D यूजिंग योर KCL KVL जो पहले हमने सीखे है ना। सो वोल्टेज इज 0, V माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू, ये आपको था ना, ये I करंट यहाँ से अगर पास कर रहे हैं, सो यहाँ पे मान लीजिए दिस इज योर जो है I1 पास कर रहे हैं एंड दिस इज योर I2, सो दिस इज योर I2 एंड इसके थ्रू करंट तो नहीं जा रहे, सो दिस इज द I1। सो इन लूप 1 जस्ट लूप 1 देखिए आपको है ना, दिस इज नॉट ये जो है ये I2 है ना, ये I2 इधर जा रहे हैं, सो है ना, दिस इज I2। सो इन लूप 1 A V D, सो 0 माइनस PI1 अगेन जो है आपका इधर क्या हो रहा है, आपका करंट कौन से डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे, एंड यू आर टेकिंग लूप इज ऑपोजिट डायरेक्शन, सो नेगेटिव ऑफ I2R है ना, इक्वल टू जो है 0। सो दिस इज इस लूप में कोई भी वोल्टेज सेल नहीं है, V माइनस आई आर वन आई आर टू इक्वल टू 0, ये था ना। सो V इज 0 है ना, V इज 0, P माइनस I1 एंड I2 माइनस ऑफ I2 लेने के टाइम देखिए I2 का डायरेक्शन उल्टा है, आपका लूप का डायरेक्शन दिस वन बट करंट का डायरेक्शन उल्टा, सो दिस इज 0। सो PI1 इक्वल टू जो है I2R, सो I1 बाई I2 इक्वल टू R बाई P। okay, now for next loop, second loop, loop number 2, okay, second loop number BCD again जो है वोल्टेज 0, I1Q माइनस ये I2 का डायरेक्शन अगेन उल्टा, I2 इंटू एस इक्वल टू 0, ओके। सो I1Q इक्वल टू I2S, so I1 over I2 equal to S by Q, so R by P equal to S by Q और P by Q equal to P, ये जो है R by P, so P by Q equal to R by S, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। P by Q equal to R by S, again सेम है ना, RQ, दिस इज RQ PS RQ, इस तरीके से लिख सकते हो। सो इन बैलेंस कंडीशन मीन्स इन दैट कंडीशन जो है जहां पे आपका जो है करंट पास नहीं करेगा, दैट कंडीशन इज बैलेंस कंडीशन, दैट कंडीशन I इक्वल 0 इन दैट कंडीशन, एंड इन कब होगा, जब रेशियो P by Q इक्वल टू R by S। So if you know 3 resistance, okay, then you can calculate the resistance of R, okay। So let's this is व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है प्रिंसिपल यूज करके आपको पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक एंड दिस इज फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इस बॉक्स टाइप का जो हम लोग प्रैक्टिकल किताब भी शायद आप लोगों का सिलेबस में नहीं होगा, है ना। सो बट मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज, इससे इलेक्ट्रिकल का एक्सपेरिमेंट में भी देयर है ना। मीटर ब्रिज, सो आप देखिए आपका मीटर ब्रिज का एक ड्रॉ करता हूं, है ना, ये आपका मीटर ब्रिज का है ना, और इधर ये है ना, अब यहाँ पे आपका 2 रेजिस्टर्स लगा हुआ है ना,
आपका ये आपका रेजिस्टर्स को इस तरीके से लिख सकते हो, दो रेजिस्टर्स जो है इसका बीच से आपको जो है गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड, दिस इज आर एंड दिस इज एस, एंड गैल्वेनोमीटर यहाँ पे आपका एक जॉकी, एक फ्लेक्सिबल जॉकी लगा हुआ रहता है, एक फ्लेक्सिबल जॉकी, ये एक, सो ये रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ है ना। सो P by Q again this is your thing. So यहाँ पे P by Q you are deciding by length. Okay. So P by Q equal to how much? If it is length 1 and length is of the order of 100 centimeter. P by Q is L over 100 minus L. Can you write this? 1 का ऐसा लेंथ या वायर रहता है जिसपे आपका एक टैप करके आपने कहीं डिसाइड कर लिया ये यहाँ पे P by Q रेशियो. ओके, सो नाउ वेरिंग रेजिस्टेंस S, so you have to see the deflection. So this is यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना. सो ये रेजिस्टेंस को वेरी करते करते आपको इस पोजीशन पे आप देखेंगे आपका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन किधर हो रहे. So in sometime your ratio is L by 100 minus L, L by 100 minus L. This is the P by Q and R you are varying है ना. So during variation you can see there is a galvanometer. इस galvanometer का जो है कम रेजिस्टेंस करेंगे तो इधर आएगा, और एक रेजिस्टेंस चूज करेंगे तो इधर आ रहे, और नजदीक रेजिस्टेंस चुनेंगे तो इधर आएगा, और नजदीक रेजिस्टेंस इधर. ये फिर ये वन टाइम यू कैन फाइंड व्हेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है ना. सो ये आपको आर जैसे इस तरीके से चूज करना है, वेरी स्मॉल, हाँ वेरी हाई, वेरी स्मॉल, फिर वेरी स्मॉल. उसमें ऐसा एक रेंज ले लीजिए है ना, वेरी स्मॉल, वेरी हाई, और स्मॉल और थोड़ा ज्यादा, इसके कम, इसके ज्यादा, इसके कम. तो इस तरीके से जो है आपका एक पोजीशन पे आपको ऐसा आएगा जिस दैट कंडीशन देयर इज ए नो करंट फ्लो टू गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर विल नॉट डिफ्लेक्ट. सो दैट इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन, मींस R by S रेशियो एंड P by Q, एंड P by Q रेशियो जो है दिस इज सेम, this P by Q equal to R by S. So using this Wheatstone bridge principle you can find out the unknown resistance. These types of problem you may have to appear for some different types of problems, and Wheatstone भी ये जो है KCL KVL यूज करके डिफरेंट लूप में करंट कितना होता है दैट यू हैव टू आल्सो फाइंड आउट. तो इस तरीके से एक एग्जाम जो है एक प्रॉब्लम सेट करेंगे है ना. आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, प्रॉब्लम सेट में फिर मिलेंगे. ओके, थैंक यू.